Very good afternoon to my dear students. First of all, I welcome you into my YouTube channel Untitled Maths. Okay, so today I am going to start a very new topic and which is not yet you study in your previous classes like class 9 or class 10. Such type of discussion was not done. So this is very new topic for you, and today I am going to discuss this particular topic, and this is called principle of mathematical induction. In your textbook there is a particular topic that is called what? Principle of mathematical induction. So before going to know about there is a concept regarding principle of mathematical induction. I am going to define few small concept which is related to this particular topic. Okay, so first of all we know about what is statement. What actually is statement? Statement, you generally understand that it is like a sentence or a description. It is a sentence or a description which has some truth value. Okay, either false or true. That is whenever any sentence you uttered and its truth value, if this truth value is what? Either true or false, then it becomes a statement. Otherwise it is not a statement. If we could not find that is particular person uttered a sentence, and if we could not find its that is called उसका truth value क्या है, जैसे true हो या false हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो हम कहेंगे कि ये particular sentence जो जिसने uttered किया है ये क्या है? स्टेटमेंट नहीं है. स्टेटमेंट बनने के लिए क्या होगा? कोई भी सेंटेंस हो या डिस्क्रिप्शन हो, उसका कोई एक रिजल्ट आना चाहिए. आइदर रिजल्ट इज ट्रू or is false. This is the statement. Okay, so here I am written a sentence or description to be true or false is called a statement. ये true भी होना चाहिए या false, कोई भी हो, दोनों नहीं हो सकते, एक कोई भी एक हो तो जाके ये क्या होगा? स्टेटमेंट होगा. For example, suppose that if I take two examples, the first example is 6 is divisible by what? 3. 6 is divisible by what? 3. Definitely it is a true statement because we know 6 is a number which is divided by 3. 3 से divisible होती है. There are 6 days in a week. It is also a statement, but it is not correct. It is a wrong statement, so we can say it is a false one. Okay, this is a false statement. Okay, so what is mathematical statement? Mathematical statement is what? Where mathematical information is inculcated. और हम इस स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ चीज़ होगा, उसका वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा. सच टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज 2 is greater than 3. 2 is greater than 3. So 2 is greater than 3 is not true. It is a false. So it is also a statement, and such type of statement are called mathematical statement. Here mathematical symbols are used, information are used. Okay. So I hope you understand. So what is statement and what is mathematical statement? Okay, because our principle of mathematical induction is related to a statement. Okay, so I hope you understand this. And there is an example I have given also. N square plus n is an even number. It is an even number for n belongs to n. For every natural number it is an even. This is a statement. It may be wrong or it may be true, but definitely we will get a result, right? n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा. तो ये रिजल्ट क्या होगा? इवन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. स्टेटमेंट इज व्हाट? n स्क्वायर प्लस n इज इवन. इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर देन pn इज ट्रू. If I say n square plus n is an even and it is related to natural number, we will denote this particular statement by a symbol. It is called what? Symbol is what? Pn. So naturally what? Statement related to natural number are denoted by what? Pn. Okay, Pn is the statement. What is the statement? N square plus n is an even number. Maybe Pn is true for n equal to 1 or true for n equal to 2, for may be true for all natural number or may not be true for all natural number. What is our job for principle of mathematical induction? Our job is that we are to validity of the statement. ये statement का validity check करना है. क्या है? If the statement, suppose this is the statement, is it true? The statement is true or not for all natural number. That is the
job of principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction का जॉब है कि validity of the statement for all natural number के लिए true है कि नहीं, that is very very involved with natural number. Okay, natural number के साथ जुड़ा हुआ एक particular concept है, this is called principle of mathematical induction. Okay, so I am going to now discuss about principle of mathematical induction. What is the principle of mathematical induction? Let us state it first. So I am giving the statement of principle of mathematical induction first and then explain. Principle of mathematical induction. Okay. P and be the given statement related to the natural number related to the natural number. Okay, what is the first statement? First statement is Pn is true for n equal to 1. ये Pn क्या होना चाहिए? Whatever be the statement related to n, that statement should be true for n is equal to 1. That is P1 is true. If you put n equal to 1, you get P1. जो P1 जो statement मिलेगी, ये P1 statement क्या होना चाहिए? True होना चाहिए. पहला काम होगा आपका, first you have to prove that whatever be the statement given, that statement should be true for n equal to what? 1. That means P1 is true. Next step is that assume that Pk is, assume that the statement, पूरा डिटेल्स लिखे, the statement is true for n equal to a and show that it is true for n equal to k plus 1. N equal to what? True for n equal to what? K plus 1, where k is a natural number and 1 less than equal than k less than equal than what? N. That means k is a particular natural number which may be 1, may be n and in between कोई भी हो सकता है. So हम लोगों का क्या काम है? Assume that the statement is true for n is equal to k. Whatever be the statement will be there, that statement should be correct. We suppose that the statement is true for n is equal to k. We suppose करना है हमें. And after supposing, we are going to prove that this statement Pn must be true for n is equal to what? K plus 1, means next natural number. We suppose that it is true for k, and from here we have to prove that it is true for k plus 1. Okay, it means what? If Pk is true, we have to prove that Pk plus 1 is also true. We have to prove that. Okay, suppose that if it is true for k, then from here if we prove that k plus 1, that means if we suppose that Pk is true, then from here we can prove that Pk plus 1 is also true. Then what is the principle of mathematical induction said? They are then for n is equal to k plus 1. That is you write Pk is true implies Pk plus 1 is also true. Then by
principle of mathematical induction that the given statement Pn is true for all natural number. For all natural number. This is fine. This is the total statement. The principle of mathematical induction is what? It is related to a statement regarding natural number. And इसका condition क्या है? First you have to prove that it is true for n equal to 1. Then you assume that it is true for n is equal to what? K. Okay. After supposing that n is equal to k, that means pk is true, you are going to prove that it is true for n is equal to k plus 1. Okay. That means you are to prove that pk plus 1 is also true. ठीक है. तो अब अगर ऐसा है थोड़ा सा डिस्कशन करें. 1 के लिए ट्रू है, शो कर लिया. इसके बाद यू सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर k, and from here you are to prove that it is true for what? K plus 1. Then finally what happen? It will be true for all the natural number. 1 के लिए आप पहले सपोज कर लिया, आपने 1 के लिए प्रूफ कर दिया इट इज़ ट्रू. ओके. अभी क्या करेंगे? k के लिए सपोज करेंगे. तो k क्या है? k आप क्या है? 1 तो हो गया. इफ़ यू सपोज दैट k इक्वल टू 1, सपोज k इक्वल 1 के लिए ट्रू हो गया, तो आप k इक्वल टू 1 के लिए ट्रू सपोज करके आप अगर प्रूफ कर सकते हैं k प्लस 1 के लिए, तो आपका क्या होगा? ये 1 के लिए ट्रू, तो k प्लस 1 इक्वल टू वाट? 2 हो जाएगा. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 2. नाउ ये जो हमारा जो क्या है सीक्वेंस है, सपोजिंग k इज ट्रू एंड देन शो दैट k प्लस 1 फॉर k प्लस 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू. इट मीन्स फर्स्ट आई सपोज दैट k इक्वल टू 1 एंड देन बाय दिस सीक्वेंस I already told you it is true for what? 2 also. Okay. If I suppose that the statement is true for 2, जैसे मैंने प्रूफ कर लिया ना, 2 के लिए प्रूफ कर लिया, तो k इक्वल टू 2 ले सकता हूँ. तो k प्लस 1 क्या होगा? 3 होगा. दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 3 ऑल्सो. समझ में आ रहा है? नाउ ये 3 के लिए ट्रू हो गया, तो हम 3 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं. इसमें 3 ले लिया. दैट मीन k कैन बी वाट? 1 से शुरू होगा ना. तो इसीलिए इट इज़ k इक्वल टू 3 के लिए ट्रू. दैट मीन्स बाय दिस सीक्वेंस इट इज़ ट्रू फॉर 4. k प्लस 1 कितना होगा? 4 होगा. दैट मीन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 4. अगेन यू रिप्लेस 3 बाय वाट? 4, बिकॉज ऑलरेडी यू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर वाट? 4. देन वाट हैपन? इट इज़ ट्रू फॉर वाट? 5. दैट मीन दिस following this sequence what will happen? Ultimately we can prove that the statement is true for all the natural number. That is the principle of mathematical induction. आपको ये समझना है. 1 के लिए true, you suppose that it is true for k, and from here you have to prove that it is true for what? k plus 1. और ये सीक्वेंस क्या है? पहले k इक्वल टू 1 लीजिए, उसके बाद 2 मिलेगा, फिर k इक्वल टू 2 लीजिए, इसके बाद 3 मिलेगा, फिर k इक्वल टू 3 लीजिए, इसके बाद 4 मिलेगा. इन दिस वे यू विल गेट फॉर ऑल द natural number the statement is true. Okay. So regarding a particular statement related to natural number, it is very difficult for us to solve this particular statement is true or false, whatever be. उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि you can check for 1 and then 2 then 3 then 4. कितने टाइम चेक करेंगे? कितना नेचुरल नंबर चेक करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज़ वेरी यूजफुल. पहले 1 के लिए ट्रू करेंगे एंड देन यू कैन सपोज फॉर k एंड देन प्रूव दैट इज ट्रू फॉर k प्लस 1. k प्लस 1 के लिए ट्रू आपने शो कर लिया. शो करने के बाद आप k का वैल्यू पहले 1 लीजिए, इसके बाद 2 के लिए शो होगा, फिर k का वैल्यू 2 लीजिए, 3 के लिए शो होगा, फिर 3 लीजिए, देन 4 के लिए शो होगा. इन दिस वे सीक्वेंस मेंटेन होकर आपका आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. दिस इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, रिगार्डिंग टाइल्स. जो टाइल्स फ्लोर में लगाते हैं ना, बाथरूम में या कोई बेडरूम हो, सारी जो टाइल्स लगाते हैं, ये टाइल्स के बारे में एक एग्जाम्पल है. यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यू विल गेट द आइडिया रिगार्डिंग व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगी और आप उसको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी. ठीक है. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व वन पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ओके.
So more question you solve, then your clarity will on the topic will be what? Clear. पूरा clarity आ जाएगी, कोई confusion नहीं रहेगा, because this is a new topic for you. You do not get, didn't get earlier this particular topic in your classes. So आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, धीरे धीरे ये आइडिया डेवलप हो जाएगी. तो थोड़ा सा क्लियर कर ले, देन इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू टू वॉच द वीडियो. Now the question is, so whatever given the example I have given to you as a statement regarding natural number, I am going to solve it. Okay, prove that n square plus n is an even number for all n belongs to n. That means for every natural number this statement is an even number, means this statement क्या है? True. Even number means for whatever be n. For n equal to 1, for n equal to 2, for n equal to 3, for any natural number, it is always even. You are going to prove it. Okay. Let's suppose, let Pn be the given statement. Pn को आप क्या लेना चाहिए? स्टेटमेंट नाम दिया है. Therefore, what is Pn? Pn such that, this symbol is called such that, okay, n square plus n is an even number. Okay. Now what is our procedure? Our procedure is that we have to show that first the statement is true for 1, then suppose that it is true for k, and from here we are going to prove that it is true for what? K plus 1. That is the rule. Okay. Now let us check for n is equal to 1. For n is equal to 1 क्या हो रहा है? For n is equal to 1 you see put n का वैल्यू 1 square plus 1 is equal to what? 2. होगा कि नहीं? Is an even number. 2 is an even number or not? It is an even number. Okay. Ultimately this type of for n is equal to 1 this statement is क्या हो गया? True हो गया, because it is an even number. Therefore you can say P1 is true. P1 is true. Now assume that let Pk is true. Pk is true means what? What is k? K is a natural number, and 1 less than equal than k less than equal than what? N. This is what? K. Okay. Now you from Pk is true means आपको क्या समझ में आ रहा है? Pk is true means you are understanding what you understand. Pk is true means what? Pk is true means k square plus k, that is k square plus k is an even number. ठीक है, k square plus k is an even number. n के जगह में क्या आ जाएगा? ट्रू जब होगा Pk is true means what? K square plus k is an even number. ये correct, ये true हो गया. ठीक है statement. Now k square plus k is an even number. If I say m is an even number, suppose m, any number, m is an even number, even natural number. What you understand? That means m is the multiple of, m is the what? Multiple of 2. जैसे m इवन नंबर होगा तो m क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, होगा कि नहीं? 8 होगा. तो ये कैसे लिख सकते हो? 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3. That means m क्या होगा? Multiple of 2. 2 into something. Or what is something? Something is again natural number. These are what? 1, 2, 3 are what? Natural number. So m is even means we can write m is equal to what? Twice k. M is equal to what? 2 into something. What is something? K is what? Again a natural number. Again a what? Natural number. Now k square plus k is an even number. So what you will say? That k square plus k equal to twice p, suppose. Multiple of 2. Multiple of 2. What is p?
P बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। 2 इंटू समथिंग होगा, 2 इंटू समथिंग, किसी भी नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाती है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। दिस इज योर रिलेशन नंबर व्हाट, 1। दिस इज द रिलेशन नंबर 1। वी आर टू प्रूव दैट, वी शैल प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। पी के ट्रू तो सपोज किया था, वहाँ से हम क्या प्रूफ करना है, के प्लस 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होना है। अंडरस्टूड? दैट इज क्या प्रूफ करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। ये n के जगह में k प्लस 1 पुट करो, दैट मीन यू आर टू प्रूव दैट k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज एन इवन नंबर। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ नहीं किया है, ये तो हमें सपोज कर लिया क्या है, ये इवन है, तो वहाँ से हम प्रूफ करना है। दैट इज k प्लस 1, n के जगह में k प्लस 1 पुट करो, प्लस k प्लस 1 इज एन इवन नंबर। ये प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, वी आर टू प्रूव दैट, वी शैल प्रूव दैट k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज एन इवन नंबर। p के प्लस 1 का मतलब यही है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस लिटिल कैलकुलेशन टू बी डन। k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, एक्सपांड करें, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, फ्रॉम हियर यू कैन राइट k स्क्वायर प्लस 2k असाइड, थोड़ा अलग करें, एंड ये जो दोनों है वहाँ से यू टेक 1k, आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने रिप्लेस करना चाहता हूँ, उसका यूज़ करना चाहता हूँ, उसको यूज़ करके उसको शो करना है, ठीक है। पी के को सपोज करके आपको पी के प्लस 1 को क्या करना है, ट्रू शो करना है, तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ में एक के निकाल के हम ये अरेंजमेंट किया है, हाउ मेनी केज विल रिमेन, दिस के एंड 1k, 2k एंड प्लस 2, दैट मीन 2k प्लस 2 विल रिमेन। अंडरस्टूड? एंड फ्रॉम हियर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k क्या है, फ्रॉम 1 to p प्लस 2k प्लस 2, तो आप लिखेंगे यूजिंग, हाउ टू गेट, यूजिंग 1, दैट मीन्स आपने क्या यूज़ किया, p के का जो रिजल्ट है उसको यूज़ किया है, तो वहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 इंटू p प्लस k प्लस 1। अभी आप लोगों को क्या है, व्हाट इज़ p? p इज़ ए नेचुरल नंबर, k इज़ ए नेचुरल नंबर, 1 इज़ ए नेचुरल नंबर, एंड सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज़ ए व्हाट, नेचुरल नंबर। ये तीनों का सम क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। सो वी सपोज दैट इट इज़ 2q, वेयर q क्या है, p प्लस k प्लस 1 बिलोंग्स टू व्हाट, f, इट इज़ ए नेचुरल नंबर। फाइनली व्हाट वी गेट, दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज, that is this particular result is a multiple of 2. Since this result is a multiple of 2, we can say this is an even number, that is k plus 1 whole square plus k plus 1 is an even number. Okay, I hope you are understanding the logic, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने 1 के लिए ट्रू किया था, बाद में n इज इक्वल टू k लिए सपोज किया था, सपोज करने के बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या किया, प्रूफ कर दिया, हो गया। 1 के लिए ट्रू शो किया, देन k के लिए सपोज किया, देन प्रूव व्हाट फॉर k प्लस 1, हो गया। हमारा स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमने फॉलो किया है। इसका मतलब क्या है कि k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज एन इवन नंबर, प्रूफ हो गया। देयरफॉर यू कैन से p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। Why true? Because whenever pk is true, अगर ये ट्रू नहीं होता तो आप ये ट्रू नहीं कर पाते, बिकॉज यूजिंग दिस, उसको सपोज किया था, उसका रिजल्ट जो 1 मिला था उस यूज़ करके उसको इवन शो किया है। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द गिवन स्टेटमेंट
is true for all natural number. वो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव था, इस क्वेश्चन का क्या था ऑब्जेक्टिव क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. जब ये सीक्वेंस फॉलो होगा, you suppose that for 1 and then you suppose that you first prove that it is true for 1 and suppose that it is true for k, and then if you prove that it is true for k plus 1, then from this sequence you can say that it is true for all natural number, and which we follow it and prove it, and hence the given statement is true. So this is the actually mathematical induction, and I have solved a very simple question and try to give you the idea about how to apply mathematical induction to solve a particular question. Okay, so more type of questions I will solve in the next class from your textbook and directly from your textbook, and I will give some of the questions will be given to you as a homework, and some of the question I will give as a study material, such that we can cover up the syllabus very soon. Okay. So hope for the best, and I believe that you understand the class. This is a very new topic for you, and try to go through the videos, understand every content, every line, every portion of the video, so that you can understand clearly about the principle of mathematical induction. Okay. Thank you very much. All the best, and have a good day ahead.